All right, Manjeet. Good morning, and we are ready to start the session. I will remain off cam, and we Okay, want you to give us the instructions to move ahead. I, sure. once we have some members in the room, Then I'll I'll start. start. Sure. Okay, thank you. Good morning, Ramesh. You'll be doing yoga today? Okay. You are on Uh, mute, sir. oops, sorry. No, I think Dharmesh, sir. He's on mute. Sorry, Manjeet. That was for Ramesh. I was talking to him on the phone. Okay, sure. No problem. This is from Aarti Manjeet, yes. Okay.
So Manjeet, while we wait, maybe it would be nice to just have a quick introduction to you. Maybe you can tell us also about like what the yoga lifestyle means to you and how you got onto this journey. Oh, great. Thank you so much. Um, Sorry, I forgot to ask your name, My name is Shazeb. Shazib ji. So, my journey in yoga path started in 2009, and I'm very proud to say and loved to say it. I'm the chosen one. And then throughout all these years, almost a decade or more than a decade, I experienced that everyone who is in the path of yoga is the chosen one. Because mostly in most of us, we started without any wanting to be in this path, without any willingness to practice, the sattvic practices, yoga and healthy diet, that's yogic ahar or yogic lifestyle. But somehow eventually we happened to be there. So I always say Guru Kripa, because of then their blessings. I happen to be in this path, and since then, over the years, got the opportunities to work not only in India but abroad, different parts of Indian states, meeting different aspects, walks of life, their experiences, people, their experiences, their journeys, their um, expressions, their feelings, and initially, I also used to think that yoga is only the exercise part thing or these asanas, but eventually I got to understand it's not just asana. As one of the quotes of Hansama, yoga is not just about asana. Its universe is beyond that. And literally, the word that stuck in my mind is universe. Yoga is universe. It's huge. As like in this galaxy or in this planet, and so in this galaxy or in this whole universe, we are living in this tiny planet which for ourselves is a very big, but it's a tiny planet. So same goes with asan part. That drew my attention and my inclination for studying more about yoga. Then I did my MA, Masters in Yogic Science in 2012, 13. So there I got to study about the literatures and some yogic granth, Hatha Yoga, Maharshi Patanjali, Yoga Sutra, Bhagavad Gita. It's all about yoga. And that got me struck. Just one word in English like wow, or in Hindi is अचंभित कि ये भी क्या होता है. अचंभित वर्ड लाइक कितना कुछ है जानने को, और जिसमें इसमें जितना भी जाने ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं. Everything is illusion. Whatever we could think of, whatever we could imagine is illusional. हम जो भी जितना समझते हैं तो फिर कैसे इसको चला जाए, व्हाट्स द वे टू कूप अप विद दिस thought or with this journey. Just flow like water, go with the flow. Whatever comes your way, accept, act, and observe. Restrain yourself from reacting. All those talks, all these words have been running in my mind, and then a lot of videos of Dr. Hansaji helped me a lot. One of her videos in which she mentioned, and in her discourses also she mentions, life is all about B and C, or B and D, birth and death. There between lies a C. That's all about choice. So choices you made. So initially I said I was a chosen one, like everyone else in the path of yoga. But later on, how to continue, or whether to continue or not, that was a choice. So it became my choice. Somehow it became my career path. So more than over a decade, I am a professional yoga teacher. And I really love to say yoga practitioner, because the more I know, the more I get to understand its philosophy. Even the way I practice asanas, it changed my every time it changes my thought process. It gives me more to think. It gives me more to analyze. I've been behaving this way. I've been eating this way, or I've been interacting with people or with myself this way. It can be some other ways also. So always the other ways are more beneficial or more exciting. So now I've got the opportunity to take care of its Raipur branch. I'm in the Raipur.
I'm in Raipur branch of the Yoga Institute, working as center coordinator. It's been 3 years here. Wonderful journey. Many counseling sessions have been done on again, different aspects of life, whether it's relation or financial, or mostly we get stressed with ourselves and with the people around us, be it colleagues or friends or family. And I just, sit there for the counseling. I just sit there in my office and talk to people. I let them talk, and in my mind, I'm chanting. Praying to the gurus. Please, you listen to it. As we always practice in Bhagavad Gita, Yogeshwar Krishna is the supreme guru of yoga. So I just pray to him. Please listen to him or listen to her, listen to the issue, and guide me as you want. So many a time it happens, the counseling or the words come out of my mouth, or the sentence or the ideology or the philosophy from yogic texts, it astonishes me too. That gives me opportunity to first practice yourself. It always says, it never happened, or perhaps sometimes, I don't remember actually, but most of them, mostly like 99% happens. Whatever I'm saying, it is first of all, asking me to practice first. इमेजिन तुम पहले प्रैक्टिस करो, बार बार करो, इफ यू हैव फेथ, तब उसका असर सामने ही पड़ेगा. एंड इट डज हैव दैट इम्पैक्ट. तो बस ऐसे कुछ चलते चले आ रहे हैं. When I was working abroad, so there was I was in Vietnam for more than 2 years working as a yoga master. तो वहां पर योग का एस्पेक्ट है, योग इज जस्ट एक्सरसाइज. So I used to call it not yoga practice. I used to call it yoga exercise practice. So I used to ask my members to differentiate between two. Yoga, different. What we are doing, yoga exercise. You want it, it's okay, no problem. It also has its many more benefits other than just physical fitness. Right. So वहाँ थोड़ा सा language issue होता है. Not every one of them understands English, so we have translator there. But sometimes some of the members they know very well thorough with this language. They're studying the scriptures and got to understand that many of them are very much interested to learn Sanskrit so that they can study yogic texts. So many times there was the system in the company, they used to buy some personal sessions with the masters for practice, right? So what do they used to practice? Not physical practice. We used to sit and talk. They used to ask me questions. What do you know about yoga and this definition? What says in Bhagavad Gita? What is this Yoga Sutra of Maharshi Patanjali? So again, lovingly, we used to discuss for 1 hour or 2 hours. They're paying for this just for the discussion. Because otherwise, see, I said, I'm available. Otherwise also, ma'am, like we can, well, no, master. If when I pay, you're with me. But nobody can disturb you. They won't send you some other. I said, okay, buddy. So that also wonderful thing that yoga is now spreading across. It's very famous globally, but spreading its wings in terms of philosophy. And right after coming back from there, earlier I've already been associated with the institute for, it's been around 9-10 years, and I've been studying the books by Sri Yogendra ji, Mother Sita Devi ji, encyclopedias by Dr. Saab, and books by Hansama. And right after coming from Vietnam, to just refurbish or repolish my yogic philosophy, again did my advanced TTC from the institute. Though I've done it earlier, but again, because it's been 2 years, there was the environment just to focus on your physical advancement, physical practice. So I had to brush up. And again, same philosophy, same texts, same sutra, same shlok, which I had studied earlier 2-3 years back, 4 years back. Now studying again from getting to learn from these revered teachers from the institute. They gave me some other experiences, because that now includes my personal experience, my life experience. Throughout these years, life has been ups and downs. And where did I miss to practice these philosophies? That gave me confidence and the commitment. No, you can practice now as well. So बस जब से चला आ रहा है कि जो पहले मिस हो गया, अब वहां पर ऐसा रिएक्ट कर सकते थे, अब करते हैं. Situations, they keep coming.
they keep coming back in some other form or some with some other people. Situations लगभग सेम रहते हैं until we learn to react or learn to act upon कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे भी रिएक्ट किया जा सकता है। मित भाई से लड़ाई होती थी तो रिएक्टिव मोड में चिल्ला दिया, वहीं बॉस से लड़ाई हो रही है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो वहां पर रिएक्टिव मोड में नहीं कर सकते। तो भाई से जब सेटलमेंट हुआ, इमोशंस को एक्सेप्ट किया, भाई ठीक है वो लड़ता है, उसका हक है, बड़ा है, या मैं बोलूंगा तो मैं कैसे उसको अपनी बात को पोर्ट्रे करूँ सो दैट ही वुड अंडरस्टैंड। तो बस वो फिर प्रैक्टिस होती है बॉस के साथ भी, वो फिर प्रैक्टिस होती है पेडिस्ट्रेंस के साथ भी, वो फिर प्रैक्टिस होती है फ्रेंड सर्कल में कि हाउ डू आई से सो दैट अदर पर्सन वुड एटलीस्ट फर्स्ट लिसन, और अच्छा लगेगा तो मानेगा, नहीं लगे तो भाई कोई भी नहीं मानता है, मैं भी नहीं मानता किसी में। तो वो फिर धीरे धीरे वो घर पे प्रैक्टिस, स्वयं से प्रैक्टिस, ऑफिस में बढ़िया उसका इम्प्लीकेशन मिल रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बढ़िया इम्प्लीकेशन मिल रहे हैं, कहीं भी रैंडम ग्रुप में भी उसका एक अच्छा असर मिल रहा है। सो दैट गिव्स द कॉन्फिडेंस कि यार वो है ना, एक डेल कार्नेगी की बुक है, इट्स वेरी फेमस, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड मेक फ्रेंड्स, योगिक फिलोसफी, कंप्लीट योग। आई हैवंट रेड दैट बुक, वो फ्यू नुक्स एंड क्रुक्स वो कभी सोशल मीडिया मिलते रहते हैं, लेकिन द योग सूत्र विच इज द फाउंडेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, क्लासिकल अष्टांग योग, that is the basis of living life, living a healthy yogic life, physically, mentally, emotionally, financially, socially, everything. The classical Ashtanga Yoga, Yoga Sutra. It's really all about psychology. And the more you understand about your own psychology, you will get to understand about people's psychology. And it's a long way journey. And it's interesting, very interesting. और सेम बस यही पढ़ाने को यहाँ मौका मिल रहा है मुझे। TTCM कोर्स यहाँ पर होते हैं, बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज। वी हैव फ्यू बैचेस ऑफ, we have around 400 plus members here within the span of these 2.5 years. Lovely people, so enjoying. And now this opportunity, that institute called me that Majid, you're going to take 2 sessions here with Jen. जब ये कॉन्सेप्ट सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। So that's it, that's about me, जब भी जो कुछ मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। Right. Thank you so much for sharing about you, Manjeet. That's so lovely to hear. I Thank have you. two more questions for you. You did your studies in yogic science with the institute, or where did you first do it? I'm from Jabalpur, so we have a university here, Rani Durgavati University. So I did from there. Yeah. Okay. All Because right. institute just started from this year. This Masters in you institute. Yeah, this year. right, Yes. right. Okay. Okay. And what is your take on because you spoke about what the yoga philosophy means to you, and how it has become a way of life more than a part of life for you. What do you think, from your own experiences, the seniors in your life and so on? While we all know that yoga is very beneficial, but when it comes to seniors, especially those who are 60 plus and who may not have had followed any fitness routine in their life, because there are many such people that we also come across, and today they need to build up their fitness levels so that they can plan ahead for the golden years and be fit both with in the mind and the body, so that they actually lead a very beneficial life for longer, in a time when the medical advancements, and we are being told that we would live up to 100 years, Right. but at the same time, if you're not physically and mentally fit, it could be such a challenge. So can you tell me Right. about what you think, the advantages of yoga for seniors, and especially in this phase of life? See, yoga has so many advantages for every one of us, in our different ages and different styles, lifestyles, everything. The very as you mentioned, two things: physical and mental fitness. When we will also come at this age, एक माइंडसेट है, जो इंस्टीट्यूट में अक्सर डिस्कशन होता है कि योग आसन हम कैसे डिजाइन करें, जस्ट फॉर द टीचर्स, कि आप योगासन किसको क्या बता रहे हो। सो इट्स नॉट हाउ मच यू नो, बट हाउ मच दे डिजर्व और हाउ मच दे नीड। आसन वैसे डिजाइन हो, वैसा करना है, और उसका बहुत सारा असर पड़ता है साइकोलॉजी एंड लाइफस्टाइल। हमारा एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है इन द इंस्टीट्यूट, AVAV, आहार विहार आचार विचार। जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारे खैर सभी एज में, किसी भी एज ग्रुप में, लेकिन
जैसे जैसे हम एज करते हैं ये हमारे चारों पिलर बहुत अफेक्ट होते हैं। आहार, हमारा डाइट बहुत अफेक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन। विहार, विहार मीन्स रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मीटिंग विद पीपल, स्पेंडिंग टाइम फॉर योर सेल्फ। तो क्या होता है, एक बिग चंक ऑफ टाइम इन आवर एज हम ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं या तो सिर्फ सोशलाइजिंग करने में, या तो वो प्रोफेशनली अपने आप को एडवांस करने में, बिकॉज अर्थ मनी इज द थिंग, राइट। तो कुछ दोनों साइड ज्यादा फोकस करने में कोई ना कोई एक साइड छूट जाता है। तो अभी अगर मैं देखूं कि अगर चलो बहुत सारा फोकस किया अर्थ को बिल्ड करने में, मनी और प्रोफेशनल को बिल्ड करने में, सोशल लाइफ ऐसे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक सबसाइड हो जाती है कि उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक एज के बाद अर्थ उतना बॉदर नहीं करता है, बिकॉज वी हैव इट इनफ, हो गया जितना एक्सपीरियंस करना था, जो एक्सप्लोर करना था। नाउ वी वांट सोशल लाइफ। अब अचानक से कैसे बने, और वो स्किल्स होते हैं एज द ड्यूरिंग लॉकडाउन, इनफैक्ट आफ्टर लॉकडाउन बहुत सारे मीम्स और जोक्स चलते थे कि 6 महीने जो घर पे रह गए हैं, अब मुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं है, अब मुझे लोगों से बात कैसे करनी मुझे नहीं पता है। मैं काफी सारे जोक्स बनते हैं कि अब कहीं भी हम सामने फेस टू फेस आते हैं तो मोबाइल रख के ही बात करते हैं, लगना चाहिए कि वर्चुअल बातें हो रही है, जैसे लाइक नाउ वी आर डूइंग। सो होता है, हैबिट है, माइंडसेट है, आपका नर्वस सिस्टम है, वो एक कंफर्ट जोन है, अलग हो। हमें दूसरे आहार और विहार, फिर आचार, हमारा रूटीन। रूटीन भी बहुत डिस्टर्ब होता है, या आई शुड से चेंज होता है, बिकॉज अभी एज है तो या तो नींद नींद वैसे कमी हो जाती है, तो देर रात तक नींद नहीं आएगी, या दिन में बहुत थकावट होती है, या फिर उसका आपको भूख भी अलग तरह से लग रही है। लास्ट का आहार ही है, आहार विहार आचार विचार। थॉट्स हमारे बदलने लगते हैं, अभी क्या करना लाइफ में। तो कई बार हमने ये भी अपने आदरणीय बड़ों को कहते सुना है कि अभी कितना दिन बचा है, हो गई हमारी लाइफ, ऑल दीज डायलॉग्स, व्हाट वी हैव नाउ टू लिव फॉर, अभी हो गया, अभी अभी ये तुम्हारी जर्नी है। तो वो जो सेंटेंसेस शुरू हो जाते हैं, इनफैक्ट आई हैव सीन विद सम ऑफ माय मेंबर्स हियर एंड सम अदर प्लेसेस आल्सो, 60 आते आते ना सबके डायलॉग्स होने लगते हैं। So there I stop them. I, very gracefully and respectfully I stop them. Please don't say this. अभी 60 पे हो गए, अभी क्या बचा, अभी हो गए ना जीवन हमारा, अभी तो ठीक है ना, अभी तुम लोग के लिए है। मैंने guess that's why you don't please say this, because 60 till 60 you have lived for you and for your family. Now you have to live for me. You have to live for people like me, for us. हम सोसाइटी, हमारे लिए अब आपको जीना है, आपके अनुभव हमको शेयर करने हैं। आपके अनुभव मतलब यू हैव दैट ग्रेस ऑफ विजडम, नॉलेज, एक्सपीरियंस, जो भी है। आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस, बहुत कुछ अगर लाइफ में आपको ऐसा लगता है बड़ा नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया वो भी आपको मालूम है। यू कैन शेयर विद अस व्हेन यू लिव विद दिस थॉट्स के अभी क्या ही बचा है, अभी ठीक है, अभी तो जस्ट वेटिंग, और आप लोग जियो, वो रिसेंटमेंट एक आता है, रिग्रेट आता है। नो, यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, यू हैव गॉट अ वंडरफुल जर्नी, good or bad, it's with everyone, it's with just with the self analysis, ups and downs with everyone, but you have lived a wonderful journey of your life. You have a lot to think, you have a lot to share with us, with people us who are willing to understand. Then most of the time it happens, the कहानी घर घर की, जैसे अभी यही बात मैं अपने बच्चों को बोलूं, नहीं सुनते, हम कहे ठीक है ना, तो मैं अपने पिताजी की बात नहीं सुनूं, वो किसी और को सुना रहे हैं, आप अपनी बात मुझे सुना दो। It goes this way, na? You just have to give back to your society wherever it goes, not necessarily directly through your genes only or through your families only. वो होता है, नहीं होता, नहीं होता है। So beautifully ये जो acceptance, I would say, मुझे जो इंस्टीट्यूट से सीखने मिला है, मार्केट डिस्कोर्सेज में कई बार यही आता है, बी लाइक वाटर, पानी, बह जाओ, जिस भी पात्र में रखे, जहां भी यूज किया जाए, बी लाइक वाटर, जो भी कलर मिक्स करें आप उसमें ढल जाओ, जो आ रहा है एक्सेप्ट करो। आप देखो आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन पुट इट, व्हाट यू कैन गिव, व्हाट यू कैन जस्ट शेयर एज पर योर एफर्ट्स, वो करते हुए। सो डीलिंग विद सीनियर सिटीजन वेरी रिस्पेक्टफुली। एक चीज जो हमारा ध्यान रखते हैं, अब ये मुझे बहुत ऑब्जर्वेशन में आता है, थ्रू मीटिंग विद दीज टीचर्स एट माई इंस्टीट्यूट एंड लिसनिंग टू द डिस्कोर्स, पहले के दे आर फिल्ड विद द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, तो एक ग्रेस आता है, और उनको ये रियलाइज कराना दैट यू मीन अ लॉट टू अस, टू मेनी ऑफ अस, परहैप्स नॉट एवरीवन बट मेनी ऑफ अस, यू मीन अ लॉट। और आप जितना, वो एक्सेप्टेंस जब आता है दूसरों से हमको, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी हम आप अगर मैं अपनी होप खो चुका, अभी क्या ही बचा जीवन में, फिर पता चलता है कि इतने सारे लोग हैं जो मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो एक एक फीलिंग आती है कि यस, या आई एम वैल्यूएबल।
तो दैट सेंस ऑफ वैल्यूएबल you feel when we say like this. And then फिर उनका जो साइकोलॉजी है, फिर उनका जो बिहेवियर धीरे धीरे निकल कर आता है। फिर आसनों में तो ऑब्जर्वेशन अलग चलता है कि कौन नीचे बैठ पा रहे हैं, कौन कुर्सी पे बैठ पा रहे हैं, फिर कौन इंस्ट्रक्शन कितना फॉलो कर पा रहे हैं। दैट्स फिजिकली अवेलेबल, तो वो डेटा मिल जाता है कि सामने देखकर भी आप ऑब्जर्व करते हैं। बट एक बिहेवियर ये भी होता है जिसको हम आहार विहार आचार विचार में बोलते हैं कि कोई एक व्यक्ति, अगर मैं हूं, मैं अपने बहुत सारी लाइफ में जर्नी ली जहाँ पे सेल्फ डिसीजन लिए हैं मैंने खुद ने, बहुत सारे लोगों के मतलब ठीक है सुना लेकिन माना अपना है। तो अभी आई हैव लॉस्ट दैट कनेक्शन के आई वुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बाय अदर्स, दो इट्स गुड फॉर मी, बट होता है बॉडी अलाउ नहीं करेगी यार, नर्वस सिस्टम बोले ऐसे दौड़ना। तो वो रिजिडिटी फिर आसनों में भी आती है कि ठीक है बोल दिया लेकिन नहीं, इतना हमसे नहीं हो पाएगा, अभी ऐसे घुमाया हाथ लेकिन नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। सो वहां पर आता है रिक्वेस्ट पे कि प्लीज थोड़ा सा करके देख लो, प्लीज Hmm. डू इट जस्ट वन मोर टाइम, जस्ट विद फॉर मी और विद मी। तो एक कंपेलिंग हो जाता है कि प्यार से आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हो, या यू आर जस्ट लेटिंग देम नो कि व्हेन यू आर हियर वी फील वेरी सिक्योर, व्हेन यू आर हियर वी फील वेरी ब्लेस्ड। तो ये चीजें बहुत असर करती हैं। और जब इस वो एक साइकोलॉजी मेंटल पीस जब देता है, मेंटली जब अफेक्ट करता है तो शरीर पे उसका असर पड़ता है। शरीर पे ऐसा असर पड़ता है कि वो अगेन ब्रेन हॉर्मोन्स सारा सिस्टम वो इतना बढ़िया वर्क करने लगता है धीरे धीरे, बिकॉज यू आर कमिंग टू द ग्रुप वेर यू आर वेलकम, एंड नॉट ओनली वेलकम, यू आर बीइंग वेटेड। दे आर जस्ट वी आर ऑल आर वेटिंग टू मीट यू, वी आर ऑल आर वेटिंग टू लिसन टू यू, वैसा। तो वेलकम वाला फीलिंग आता है तो आनंद आता है। We have some lovely members here, 70 plus or 80 plus lovely members। और वो जो वाइब्स आती हैं वो ना ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वाली, और जस्ट अब वेल विशर, दे कम एंड दे ब्लेस ऑल ऑफ अस। अभी हमसे काफी बड़े हैं तो ऐसा ब्लेसिंग दे के आते हैं, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, ब्लेस यू, ऐसा। हाँ हाँ, वेरी गुड। आपने अपने जीवन के जितना जो भी ये जो धन होता है ना, खजाना ब्लेसिंग का, ये आपने हम पर दे दिया, अभी तो काम करेगा करेगा। So that they start their practice on chair. Within few months they are on mat, and within a year they are practicing Surya Namaskar and all those asanas which earlier they used to think अभी क्या ही होगा। तो ये तो Right. experiments यहाँ पर होते हैं और ऐसे experience हमको मिले। With these experiences we get confidence कि हाँ ये तो होता है। That's why when I got this call कि आपको एक क्लास लेनी है for senior citizen, I was very excited कि the class filled with senior, मतलब only भले ही 2 है 3 है या 200 है, ओनली सीनियर सिटीजन्स। तो कितना अच्छा मुझे बात करने का मौका मिलेगा, वो वाइब्स भले वो वर्चुअली क्यों ना, वी आर ह्यूमन बींग्स, हमें वर्चुअली भी फील आता है, वाइब्स आते हैं। Right. आएगा, सी आई एम वेरी पॉजिटिव सर फॉर दिस। आज नहीं हो कोई बात नहीं, धीरे धीरे मेंबर्स आएंगे, वो होंगे, उनको मोटिवेट भी करेंगे हम मिलके, सब होगा, कनेक्ट होंगे। Right. बट इट्स ऑल लवली, इट्स ऑल लवली। Okay. Thank you so much, Manjeet. That was great to hear you. I have just one last request, and then we can जी, maybe conclude the session for today. श्योर। If you can just quickly tell us for these sessions, what is it that we should be expecting? What is it that we require? A yoga mat, for example, space so that you can do some things. And one of the things that you must be knowing about, which is that when especially with our members who are all 60 plus who would be coming for these sessions, they will be looking at it from the phone because it's a mobile app, राइट, and sometimes you are in the sleeping position, and you are not being able to look at the screen. So if you can just help guide थैंक यू सो as मच, a बिकॉज हाँ हाँ, बिकॉज आई ऑलवेज से दिस फॉर वर्चुअल क्लासेस। सो इफ पॉसिबल, if something like this, I mean this is of course a big tripod, but there are variety of tripods available in the market. If this can be arranged, so not right away, but initially or one within a week they can buy, or some arrangement, अगर ऐसा कुछ tripod they can arrange, so just वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि ये रखा सामने, and then they are away from it, right? Second thing, audio, ऑडियो के लिए if they are comfortable, if they already have some Bluetooth device जो कनेक्ट कर लिया, सो मोबाइल से दूर होने पर भी उनको आवाज साफ आएगी, या फिर एक ब्लूटूथ स्पीकर जो अपने पास रखें। ऑन वर्चुअल क्लासेस द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू लिसन टू द इंस्ट्रक्शन। मोस्टली क्या होता है, हम मोबाइल को पास में रखते हैं, सो इट हैपेंस यूजुअली दिस वे, बिकॉज आई एम द प्रैक्टिशनर, मैं एकदम पास में रहूंगा क्योंकि मुझे उस
मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन में देखना है, राइट। व्हेन वी आर टॉकिंग इट्स ओके, बट मुझे देखते हुए आसन करना, अभी मैं पैर पीछे सीधा रखा हूँ या मोड़ के रखा हूँ, इफ यू आर अ टीचर यू कैन नॉट चेक, राइट, तो अभी आप करेक्शन कैसे दोगे? लेकिन वो भी है मजबूरी के पास में रखना है। तो वहां पर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हम मतलब एज टीचर्स भी फॉलो, कि हम इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियरली दें, आराम से इंस्ट्रक्शन दें। जूम कॉल में एक और अच्छी बात होती है कि सबके नाम दिखते हैं, तो आई कैन से कि मंजीत आपको पीछे वाला पैर वो ठीक कर, बाकी सब कंफ्यूज नहीं होंगे। और कैमरे के थोड़ा दूर हो जाएं, दूर होने से बॉडी का अलाइनमेंट दिखता है, अभी हाथ सीधा है कि नहीं है, ये उठाया हाथ सीधा है कि नहीं, तो आप सीधे मत झुकिए, ऐसा रहे। देन एडिशनली वी ऑल्सो फेशियल एक्सप्रेशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसा जब हाथ उठाए दर्द हो रहा है तो चेहरे पे आता है, तो वी कैन आस्क अरे क्या हुआ आपको, तो नहीं ये ऐसे करते दुखता है, मत उठाइए हाथ, आप इतना बस उठाए, इसको ऐसे ऐसे कीजिए चलेगा। सो दीज एडजस्टमेंट्स आर देयर, बट ऑफ कोर्स ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। इसके लिए अगर ऐसा कोई डिवाइस स्टैंड वगैरह अवेलेबल नहीं है तो कुर्सी पे या नीचे, मोस्टली होता है नीचे ही रखना चाहिए। मैं इसको जरा स्विच करके फिर आपको एक बार बताता हूँ मोबाइल पे, अभी क्योंकि लैपटॉप में है ये। यू कैन लुक एट द अदर कैमरा ऑल्सो, राइट, अदर स्क्रीन। मैंने भी इसको स्पॉटलाइट कर रखा था क्योंकि रिप्लेस स्पॉटलाइट, यस। इफ आई एम कनेक्टेड फ्रॉम माई मोबाइल और ये हाथ में है, तो ये ऐसा आएगा, राइट, ऐसा लेके चलते हैं। तो बेटर वे कि इसको अगर नीचे कहीं टिका कर रख दिया जाए, लाइक दिस, तो अभी नीचे से ऊपर में ये पूरा बॉडी नजर आता है। ऑफ कोर्स इफ आई एम द प्रैक्टिशनर मुझे भी स्क्रीन बहुत छोटी हो जाएगी, बट दैट्स ओके। मैं बोलता हूँ ऑनलाइन में कि आप हमें ना देख पाए चलेगा, हमको आपको देखना आवश्यक है। Right. क्योंकि व्हेन वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग तो हम वैसे भी आपको नहीं करने देंगे, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप करेंगे, हमको वो ऑब्जर्व करना है कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। तो साथ में तो हम वैसे भी नहीं करते हैं। और जब ये नीचे रखा है तो सब दिखता है। और इसमें भी एक और अच्छा एंगल होता है, वर्टिकल के बजाय अगर इसको हॉरिजॉन्टल में रखा जाए मोबाइल को, तो ये स्क्रीन अगर हाथ पैर साइड में करेंगे तो ये बड़ा हो जाता है स्क्रीन। सो दीज आर दी टिप्स। यूजली ये हम बोलते हैं, कुछ जगह पे बहुत अच्छा ही अरेंजमेंट हो जाता है, कुछ में बताना पड़ता है। तो कुछ सेशंस के बाद बताया कि पहले चलो आना शुरू करें। शुरुआत में अभी अगेन ये अगेन ट्रिक वी यूज, राइट फ्रॉम बिगनिंग अगर बहुत सारी टेक्निकलिटीज बताए तो वो घबराहट होती है, यार इतना सब ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, पहले आए, हंसी मजाक होगा, थोड़ा इंस्ट्रक्शन सुनने की आदत होगी, और हम भी समझ पाएंगे कौन कितना रिएक्ट कर रहे हैं, कौन इसमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो जब वो आदत होती है कि एक ग्रुप बना है जहाँ बात करते हैं, जहाँ इंटरेक्शन हो रहा है, तो फिर दे फॉलो कि चलो सब हो जाता है, फिर ये भी हो जाएगा कि चलो आज सर या मैम अंकल थोड़ा दूर रख लें, हाँ ऐसे चलेगा, पकड़ के रखे कोई बात नहीं, आप आराम से कीजिएगा, ठीक है, राइट लेग ही उठाना है, लेफ्ट वाला नहीं है ना। सो ऐसा प्रिसाइसली इंस्ट्रक्शन हम उसको कस्टमाइज कर देते हैं। Okay. सो स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड, ब्लूटूथ डिवाइस या ऑडियो का अरेंजमेंट, ब्लूटूथ डिवाइस हो ये हेडफोन या फिर स्पीकर, ऑडियो, दैट्स टू थिंग्स। और नहीं है तो इसको मोबाइल को नीचे भी रख सकते हैं। All right. सर थोड़ा सा इफ आई रिक्वेस्ट, आप भी कुछ अगर बताएं अबाउट दिस जेन एस प्रोग्राम, शॉर्ट में जो भी आपको अच्छा लगे। In very simple terms, Manjeet, we are a platform that is mapping the needs and the interests of the 60 plus and bringing it to them in the form of services and solutions, in the form of content, experiences, and many other things. You mentioned, that some people at 60 begin to think that abhi ye umar mein main kya hi kar lunga, ya this is this kind of these kind of responses are actually a lot to do with the narrative that is playing against our seniors. राइट, कि आप काम से रिटायर हो गए मतलब आप लाइफ से ही रिटायर हो गए. So that is what we want to change at the core of it, which is
the narrative that is working against the seniors. So we are looking at every possible way to do that, whether it is by looking at some of the core needs like fitness, and also every day at 4 p.m. we have live shows which are for special interests, like from films to conversations about relationships and so on. So while content is one part of it, we also actually have services with coverage that is across the country. So health services, safety and security services for seniors and so on. So it's a holistic, like yoga, not like yoga. I mean, we are still very young as a product and a brand and an ecosystem. But we are also looking at the holistic way of life for seniors, and we're trying to bring that to them in the form of authentic services and so on. That is why this partnership also with the Yoga Institute, because when it comes to yoga, there are many types, that are out there today, and but we Really. want to work with the most authentic, because you have to be very careful and sensitive at the same time. While the 60 plus are not Exactly. fragile people, but we obviously don't want to get them to have any health hazards, sometimes because of the instructions and so on. So Right. that's what we are doing. We are very much at the beginning of a journey. In fact, these are very early days. This is just the second day of our life Yes. session, um, and I hope that in the days to come, we will be having a lot of new members come in, and we get the chance to interact with you, and start a day, with calmness and composure. So that's a little bit about us. Thank you so much. Thank you. That's wonderful. Wonderful initiative. And surely this will get through. Thank you Okay. so much, sir. All So right. any other instruction for me and for us to take care of during the session? No, I think it was so nice talking to you. Also, because like you mentioned, conversations also a part of the process, part of the Yes. lifestyle. Yes. Feeling good about ourselves, is also a lot to do about doing this in a group, and that is why that is another important aspect of what both of us are doing, because community is at the core of what we are doing at Genesis Life, and that's what we want to really activate. So it's great to have a trainer, an instructor, a coach like you, because you've been very candid, and you have years of experience. So that's really amazing. So we see both the technical side, but also the sensitive side, and I Thank you, really sir. look forward to the next sessions with you. So see you Thank you, sir. next Thursday next, Jay. and yeah, we will be in touch in the meanwhile. Thank you so much. Sure. Sure. Thank you, Jay. Thank Have a great day. you too. Namaste.